And guys, I was in Cupertino attending the all-new iPhone 15's launch event, and now what I have with me is, the all-new iPhone 15 and the iPhone 15 Plus. By the way, ये एक नया कलर है because अभी iPhone 15 पिंक में भी आ गया है, and this again is the iPhone 15 Plus in black. वैसे multiple colors हैं, total 5 new colors for these new iPhone 15, 15 and 15 Plus. अभी हमारे पास में एक नया पिंक है, उसके अलावा we got a blue, green, yellow and a black. And अगर आप अभी confused हो just to like check out कि आखिर नया क्या है इन iPhone में, तो जो नया है वो है इन iPhones का ये डायनामिक आइलैंड जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है. इट वाज ओनली इन द प्रो फोन्स अंटिल लास्ट ईयर, बट दिस टाइम अराउंड इन द iPhone 15 सीरीज द एंटायर लाइनअप हैज दिस डायनामिक आइलैंड. इसके अलावा क्या नया है? The way the phone kind of looks, क्योंकि हमारे पास में अभी एक मैट फिनिश है. It's a new color infused glass technology जहाँ पे kind of the colors are very subtle. It's kind of more of a pastel color feeling. Again we have the aluminum sides. Typically the layout as iPhones में होता है. हमारे पास में साइड में पावर बटन है, ऊपर एकदम क्लीन लेआउट है. अगर आप दूसरी साइड देखते हैं तो we got the mute switch plus the volume up and down buttons. And by the way अभी ये हुआ because if you bring the phones together, AirDrop and name drop and everything will work, all thanks to iOS 17. For the first time ever, अभी USB-C पोर्ट इन iPhones में आ गया है. Simply meaning कि अभी आप किसी भी फ्रेंड से कोई भी केबल बोरो करके इन iPhones को चार्ज कर सकते हो. तो ये अभी इन फोन्स में आ चुकी है. इसके अलावा if I talk about, तो we have a 6.1 inch screen on this iPhone 15, a 6.7 inches screen on the iPhone 15 Plus. Both have 2000 nits of peak brightness. और एक नया अपग्रेड हो गया है now in the camera system because these new phones have a 48 megapixels wide camera this time. तो अभी you're getting a nice balance in terms of detail and low light performance. And now because the main camera is 48 megapixels, हमको 2x जो optical zoom वाला एक feature है kind of because the sensor is very high resolution, वो भी मिलता है इन नए iPhones में. Now powering these phones is the Apple's A16 Bionic chip, जो कि last year iPhone 14 Pro और Pro Max में Apple ने यूज की थी. It's essentially the same chipset and it's a 6-core CPU, 5-core GPU and 16-core neural engine system working perfectly fine. आपको performance की अगर हम बात करेंगे तो of course you can game on these iPhones, you can use them for various different things, especially to record videos, capture photos. You can use it for your entertainment as well. आप जितना चाहें इन फोन्स को यूज कर सकते हैं and the experience definitely is going to be a good one. So Apple still says कि these new phones they come with all day battery life, and given the screen is not really a ProMotion display because this is capped at 60 Hz और A16 Bionic being a kind of an efficient processor, मुझे लगता है कि जो बैटरी परफॉर्मेंस है वो आपको काफी अच्छी मिलने वाली है. And especially in this the 15 Plus you're gonna get all day, definitely all day heavy use battery life without any issues. And let me tell you the biggest update in town. The fact being कि ये जो phones मैंने अभी पकड़े हैं अपने हाथ में, these are essentially the first lot coming out from the Apple factories और ये phones इंडिया में बन के निकले हैं. For the first time Apple is manufacturing their smartphones, I mean before the launch the new models in India. So अभी ये start हुआ है with the iPhone 15 and 15 Plus. Pro phones अभी इंडिया में नहीं बनते हैं. Pro phones अभी भी Apple बाहर से ही इंपोर्ट करता है, but these phones they are made right here in India and उसका एक फायदा हमको मिला है and the benefit is that the price has not increased. It's still exactly the same as last year जहाँ पे iPhone 15 की जो प्राइस है, the starting price for the base variant which is of 128 GB वो है 79,900 rupees and अगर आप जाएंगे ऊपर all the way 512 GB की तरफ तो जो प्राइस है वो है 1,09,900 रुपए. We talk about the 15 Plus, the starting price is 89,900 rupees for the base 128 GB variant and it goes all the way 1,19,900 rupees for 512 GB variant. So I mean new iPhones giving you essentially a newer screen with this dynamic island, a new 48 megapixels camera system, new colors, kind of new comfortable feel, all day battery, new USB-C port which now essentially gives you the power to charge your AirPods and Apple Watch
एज वेल, डायरेक्टली फ्रॉम योर फोन ऑन द गो। तो बहुत सारे नए फंक्शंस के साथ में मिलके नए नए आईफोन्स आ गए हैं। And the sales have already started, starting 22nd of September, Friday. And guys, this is just the beginning, by the way. अभी हमने iPhone 15, 15 Plus की बात करी है. I promised the coverage of the entire lineup. तो आपके लिए मैं आपको बताने वाला हूँ about the new iPhone 15 Pro and the Pro Max.